I was captain of the side, and I knew that the selectors were not very keen on having Anil in that tour. बात साल 2003 की है। इंडिया के कैप्टन सौरव गांगुली थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम को जाना था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन होना था। सौरव गांगुली सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में पहुंचते हैं। उनको मीटिंग में पहुंचते अंदाजा हो जाता है कि सेलेक्टर्स अनिल कुंबले को नहीं चुनना चाहते हैं। अनिल कुंबले का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और सेलेक्टर्स की तरफ से कहा गया कि देखिए, डेनियल विटोरी अभी हाल में ही जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो गए थे वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, काफी अच्छी गेंदबाजी करके आए हैं। अनिल कुंबले शायद उसके लिए परफेक्ट नहीं रहेंगे। कप्तान सौरव गांगुली इस बात पर कहते हैं कि अगर अनिल कुंबले नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सेलेक्टर के सामने साफ कह दिया था कि मुझे अनिल कुंबले चाहिए, अनिल कुंबले नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊंगा। सेलेक्टर्स कहते हैं गलती कर रहे हैं आप। दादा कहते हैं कोई बात नहीं, देखा जाएगा। दादा से यहाँ तक कहा जाता है कि अगर देखिए कुछ भी गलत होता है, रिजल्ट अगर नहीं आता है, आपकी कप्तानी भी लास्ट हो सकती है यहाँ से, यानी कप्तानी भी आपकी जा सकती है। गांगुली कहते हैं सीरीज के बाद देखा जाएगा। हम सब ने देखा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई, टीम इंडिया ने वो सीरीज ड्रॉ कराई थी। 2003-4 का वो ऐतिहासिक दौरा, 4 टेस्ट मैच, एक मैच दोनों टीम जीती और 2 मैच ड्रॉ रहे थे। 1-1 से वो सीरीज ड्रॉ होती है। इंडिया टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन करती है। अनिल कुंबले, जिनके सिलेक्शन पर सवाल था, 24 विकेट लेते हैं। जी हाँ, 24 विकेट लेते हैं अनिल कुंबले। उस सीरीज में जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, दादा को सही साबित करते हैं, सेलेक्टर्स को गलत साबित करते हैं। हाल में गांगुली ने कहानी भी सुनाई है। गांगुली ने साफ कहा है कि देखिए, कई बार आपको रिस्क लेना पड़ता है। आपको अपने सीनियर खिलाड़ी, आपको अपने साथ के जो बेस्ट मेंबर होते हैं उन्हें बैक करना होता है। आपको उनके साथ खड़े होना होता है एज अ लीडर, तभी आप बड़े लीडर कहलाते हैं। अनिल कुंबले के साथ गांगुली वहाँ पर खड़े थे, अपना पूरा सपोर्ट उन्होंने वहाँ पर दिया था। अपनी कप्तानी तक को गांगुली ने दांव पर लगा दिया था। शायद इसी वजह से सौरव गांगुली को इंडिया के इतिहास के सबसे बेस्ट कप्तानों में से एक कहा जाता है। गांगुली ने पूरा किस्सा सुनाया था, आप भी सुनिए। I still remember attending a selection committee meeting before the tour of Australia. Before the tour of Australia in 2003, I was captain of the side, and I knew that the selectors were not very keen on having Anil in that tour. I remember beating New Zealand in the semi-final in Hyderabad, and then going that night to pick the team in the hotel. It was about 11:30 in the night because the day-night match had just finished and we had to announce the team that night. As I entered the selection meeting, and I could sense that the selectors had made up their mind to leave Anil Kumble out. As I entered the meeting, I spoke to my coach, John Wright, who was probably the most nervous character you'll ever meet. And he was in his shorts and t-shirt, one of the dirtiest t-shirts you must have ever seen for a long, long time, because probably that was his superstition to wear the same t-shirt every game because India was winning. So as I entered the team meeting and I realized that the selectors won't pick Anil, I kept on requesting, I kept on insisting that he's such a match winner, he's done so much good stuff for Indian cricket, he must be on that tour to Australia. He said the selectors just didn't agree. He said, no, we must pick a left-arm spinner because the Australians don't play left-arm spin well. And this went on for a good couple of hours. It was getting late till when John came up to me and said, Sourav, let's finish this. We'll go with what they say, and I'm sure we'll do well. I took John apart and I said, John, he's been a champion for last 10 years. No, his graph, his slide has only been up for India. And he's on his way down at the moment, maybe because he hasn't bowled well for a period of time, and I actually feel it is a temporary thing. I went and told him that, John, if you leave Anil out of this tour, he may not play for India again. So it's important that we take him with us to Australia. The meeting went on, and I said, I'm not going to sign the selection sheet till Anil's in the side. So the selectors actually got fed up with me. They got fed up with me and said, Sourav, if you don't play well, if the team doesn't play well and Anil Kumble doesn't play well, you'll be the first person to go before anyone goes. I said, fine, I'm ready to take that risk and we'll see what happens. We went on to Australia and Anil had an outstanding series. Not just an outstanding series, but an outstanding year as well. He went on to pick 80 wickets that year, which was the most ever by any spinner in a calendar year in the history of Test cricket. The reason I say this is because that when champions or when successful people who had so much of successes over a period of time
go through such situations is very important as leaders. And I say leaders in this case because when your children grow up, when your family grows up, your job is as a father or a mother. But in a team environment, your job is as a leader. So when you're down and when your best performer over a period of time has not done well, it's important to support him. It's important to support him because in your endeavor to support and in your journey to support, you actually reinvent the best of that particular individual.